Okay, now sound is coming. Okay, I'll repeat again the brief history. In 1902, a German plant physiologist, Gottlieb Haberland, cultured isolated single palisade cells from leaves in Knob salt solution. Enriched with sucrose, Haberland is known as the father of plant tissue culture. Then in 1952, Morrell and Martin used meristem tip culture for disease elimination. They recovered for the first time virus-free Dahlia plants. This leads to the commercial micropropagation in 1950s. Now onwards, 1950 onwards, this tissue culture technique is widely used for micropropagation. Then in 1960, Morrell worked on disease eradication again. Then in 1962, Murashgi and Skoog developed a universally used high salt medium containing mineral salts, vitamins, and energy source and growth hormones. This medium is called as MS medium, Murashgi and Skoog medium. It is widely used commercially now. Now since 1974, it is used commercially. In the mean 1963 Wimber in vitro production of orchids. Orchids are very important and localized plant in Arunachal Pradesh especially. These rarely grow in other areas of India or regions. So they are generally in vivo production takes place. Naturally ये grow करते हैं, लेकिन इनका in vitro production since 1963 has been started by Wimber. Then coming to the requirements of plant tissue culture or tissue culture techniques, several critical requirements. First is appropriate tissue. जो हम लोग कल्चर करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक और सही टिश्यू लेना है हमें, अप्रोप्रिएट, जिसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो या कल्चरल प्रॉपर्टीज हो, मल्टीप्लिकेशन पावर हो, तो वो टिश्यू हमें लेना है. हालांकि प्लांट टिश्यूज में सभी में जी जनरेशन पावर होती है, दे ग्रो एंड divide quickly. Then second is a suitable growth medium. जो हम लोग टिश्यू ले रहे हैं वो किस मीडियम में प्रॉपरली ग्रो करेगा, तो suitable growth medium which can be liquid or solid or semi solid. Then third is aseptic condition or sterile condition, as microorganisms grow much more quickly than the plants and animal tissue and can overrun a culture. तो हमने जो कल्चर किया उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, यानी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फंजाई सबसे ज्यादा ग्रो करती है, तो हमें चूंकि उनके लिए भी उस कल्चर मीडियम की सुटेबल रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एसेप्टिक कंडीशन यानी स्टेराइल कंडीशंस यूज करनी है. Then next is tissue culture environment, general laboratory and media preparation room we require, transfer area culturing facilities we require, then growth room, washing and storage rooms, greenhouses and containment rooms. Containment का मतलब जहां हम इनको grow करके रख सके. That should also be sterile or aseptic, but we need a separate portions or rooms for that. ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और काम भी हो या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हों. तो इंस्ट्रूमेंटल रूम अलग होना चाहिए और टिश्यू कल्चर एनवायरनमेंट रूम और टिश्यू कल्चर रूम अलग होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज जनरल लेबोरेटरी एंड मीडिया. अब हमें एक अलग लेबोरेटरी चाहिए जिसमें बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हों या जिसमें हम मीडिया प्रिपरेशन करें. तो टिश्यू कल्चर रूम में जनरली मीडिया प्रिपरेशन हम लोग सेपरेट रूम में करते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है जनरल लेबोरेटरी एंड मीडिया प्रिपरेशन. ये इसी को पार्ट्स को हम लोग कर रहे हैं. इसमें ट्रांसफर एरिया सेपरेट, डिजाइन ऑफ ए लैमिनर फ्लो हुड दैट मे बी केप्ट इन द लेबोरेटरी, अ सेक्शन ऑफ ए कल्चर रूम, मतलब अलग अलग रूम का सेक्शन हो, टाइमर स्विच टू कंट्रोल फोटो पीरियड, उसमें जहां हम लोग कल्चर करें जिस रूम में या सेक्शन में वहां पर फोटो पीरियड कंट्रोल करने के लिए टाइमर, लाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जहाँ शेल्फ अगर हो तो शेल्फ जो बनाई गई हो उसमें भी लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, है ना. तो हम इस तरह से उसको करते हैं. और नेक्स्ट इज द एक्लेमाइटाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग प्रोसेस. जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं उनको सेट करने के लिए रूम रखते हैं तो एक्लेमेटाइज करते हैं वहां पर, देन वी यूज इट फॉर कल्चर. तो ये सेपरेट सेक्शंस होने चाहिए.
ये कुछ मैंने कोशिश की है ऑनलाइन नेट से लेने की आपके लिए। जैसे ये कल्चर रूम है, तो इसमें ये इंस्ट्रूमेंट रूम है, इसमें सब ये अवन है, फ्रिज है, अदर सिस्टम्स हैं, तो ये सब रखे हुए हैं इसमें। तो ये एक अलग रूम हो गया। लेकिन अब इसमें एंट्री के लिए डोर जो होता है ये डबल डोर सिस्टम होता है, कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी कंटेमिनेशन हो, तो हर चीज एसेप्टिक कंडीशन में। दिस इज कल्चर रूम। ये लैमिनर फ्लो दिखाया गया है, और इसमें ये हुड है इसका लैमिनर फ्लो का। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के लैमिनर फ्लो होते हैं, तो हम इसमें यूज करते हैं, और ये इसको भी एसेप्टिक कर देती है यूज करने के समय। और ये कवर्ड होता है, आगे से इसका हुड होता है जिसको उठा देते हैं, और इसमें जब यूज कर देते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। ये कल्चर रूम सेपरेट है जहां कंटेन किया जाए, तो ये कंटेनमेंट रूम या कंटेनमेंट जोन कहलाता है। टिश्यू कल्चर रूम में जोन बनाई जा सकती है। तो ये जोन जो है जिसमें हम लोग ट्यूब्स को या फ्लास्क को या जो भी टिश्यू कल्चर हम लोग जिसमें कर रहे हैं ग्लास से उसको रखते हैं। बॉटल्स भी हो सकती हैं, पॉट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये ग्रीन हाउस है, यानी जब हम यहाँ कल्चर करें तो उसके बाद हमें ट्रांसफर करना होता है इन प्लांटलेट्स को, जो कि थोड़े एक पर्टिकुलर साइज के हो जाते हैं। तब ये कवर्ड एरिया होना चाहिए, यानी हम सीधे ओपन फील्ड में इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ये कवर्ड हो, या तो इसमें नेट लगी हो, या इसमें ग्लास लगा हो, या फाइबर लगा हो, तो उस तरह से। और ये छोटे छोटे पॉट्स में इनको ट्रांसफर किया जाता है, जैसे हम लोग बाजार से मार्केट से लेते हैं अपनी गार्डन के लिए प्लांट्स। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिन पे कभी कभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या डिफरेंट डेफिनेशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर। फर्स्ट इज सेल कल्चर। तो नाम इंडिकेट कर रहा है, डिनोट्स द इन विट्रो कल्चर ऑफ सिंगल और अ फ्यू सेल्स, यानी हम टिश्यू पूरा नहीं ले रहे हैं, वन और मेनी सेल्स ले रहे हैं, लेकिन एक मास ऑफ सेल्स नहीं ले रहे हैं। अगर मास ऑफ सेल्स लेंगे तो हम इसको टिश्यू कहेंगे। तो जब हम कुछ नंबर की सेल्स और एक सेल्स का भी कल्चर करते हैं तब हम इसको सेल कल्चर कहते हैं। देन ऑर्गन कल्चर, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर इन विट्रो कल्चरिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक एम्ब्रियो। अगर हमने पूरा एम्ब्रियो ले लिया कल्चर के लिए, ओव्यूल, स्टेमन, तो ये ऑर्गन कहलाएगा। रूट और शूट एपिसिस, लाइक दैट, these parts are called as organs of a plant, so we culture them, called as organ culture. Then suspension culture, defined as the culture of cell and cell aggregates, यानी हम मास ले सकते हैं but suspended in liquid medium। जब हम लिक्विड मीडियम में करते हैं कल्चर सेल और सेल मास का या एग्रीगेट का, तो हम इसको सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। देन एक्सप्लांट्स। एक्सप्लांट्स आपने पूछा भी था आप में से किसी ने कि व्हाट इज एक्सप्लांट। द एक्साइज्ड पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू और द ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर कल्चर इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। तो एक्साइज्ड यानी कट पार्ट और कट पीस। फॉर एग्जाम्पल, if we take piece from embryo, young leaf, bud, etc., means any part of the plant, we called as explant. Now, callus, the undifferentiated mass of cells is referred to as callus. इसमें undifferentiated है, और इसको हम proliferated mass भी कहते हैं, यानी जो हमने सेल या टिश्यू लिया है उससे डिवाइड होकर के बिना डिफरेंशिएशन के उसमें रूट शूट या अदर पार्ट्स का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंशिएट हो रहा है, देन वी कॉल इट एज कैलस। The cells of callus are meristematic in nature or dividing, ever dividing cells. Then come to cell culture. टेक्निक्स हैं जो हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इन पे शॉर्ट नोट्स आता है ना, शॉर्ट नोट ऑन सेल कल्चर। सो इट मे बी ऑफ 3 or 5 marks. So how much you have to write according to the marks. But definitely definition should be there. Cell culture is actually the process of producing clones of a single cell. The clones of cells are the cells which have been derived from a single cell through mitosis and are identical to each other as well as to parental cell. The first attempts for cell culture were made by Haploid, as told you earlier in history, in 1902.
However, he failed to culture single cell, but his attempts stimulated other workers to achieve success in direction. तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से उस समय 1902 में नहीं सफलता मिली थी, कुछ कल्चर हुआ, उसके बाद फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया, बट he has given the process how to culture. Then the method of cell culture is meritorious over other methods of culturing because it serves as a best way to analyze and understand the cell metabolism. ये बेस्ट मेथड रहा कि सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको एनालाइज करने का, समझने का, एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द सेलुलर रिस्पॉन्स. तो चूंकि कल्चर में डिफरेंट केमिकल्स जो ऐड किए गए थे उनमें कुछ कुछ वेरिएशन करके किया गया, तो डिफरेंट केमिकल्स का रिस्पॉन्स स्टडी करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है. सिंगल सेल कल्चरिंग इज ऑफ इमेंस हेल्प इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स through the extension of genetic engineering techniques in higher plants. अब हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर ही रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ये एक मेथड बहुत ही सक्सेसफुल है. You can see here, ये बर्गमैन सेल प्लेटिंग टेक्निक है. एक सिंपल मैंने डायग्राम आपके लिए लिया है कि ये आप समझ सके इसको. दिस इज सेल सस्पेंशन, है ना, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया. दिस लिक्विड मीडिया इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ गॉज. छाननी से हम इसको छान लेते हैं इन अ बीकर, फिल्ट्रेट विद सिंगल सेल एंड सेल एग्रीगेट्स. अब इसमें क्या है, ये सेल सस्पेंशन है, चूंकि सेल्स इसमें मिक्स की गई हैं, उसको हमने फिल्टर किया. तो फिल्टर करने से फाइन गॉज होती है पर्टिकुलर साइज की, उससे जो है सेल या सेल एग्रीगेट्स आ जाएंगे और बाकी जो सस्पेंशन में डेब्रिस है सी में रह जाएंगी. देन मोल्टन वाइट्स अगर मीडियम, मैंने एमएस मीडियम बताया, उसके बाद वाइट मीडियम दिया था फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर. दैट वाइट्स अगर मीडियम इज शिफ्टेड टू दिस. अगर का पर्पस होता है इसको सॉलिडिफाई कर देता है. तब जब हम इसमें शिफ्ट करते हैं इनको पैट्री डिशेस में, जब ये मिक्स हो जाता है अगर मीडियम सेल कल्चर के सिंगल सेल्स के साथ, इसको हम पैट्री डिशेस में पोर कर देते हैं, और पोर करने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा विद सेल्स. नाउ ये साइड व्यू दिखाया है और ये टॉप व्यू है. अब इसमें सेल की कॉलोनीज बनने लगेंगी, सेल प्रोलिफरेट करेगी, डिवाइड करेगी थ्रू माइटोसिस. नाउ कॉलोनीज विल बी फॉर्म. तो इसको हम बर्गमैन सेल प्लेटिंग टेक्निक कहते हैं. इसमें वाइट्स अगर मीडियम, WA मीडियम यूज किया गया है. तो इस तरह से एक सिंपल टेक्निक की हाउ वी फॉलो. Now coming to the second question, that is suspension culture. A culture which consists of cells or cell aggregates initiated by placing callus tissue in an agitated liquid medium. Agitated का मतलब shake liquid medium is called as a suspension culture. The continuous agitation of liquid medium during a suspension culture is done. उसको हम shakers पे रखते हैं by using a suitable device. We call it as a shaker. Most common being the platform or orbital shaker. Shakers भी कई तरह के होते हैं. इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म शेकर. प्लेटफॉर्म बना होता है, उसमें हम लोग कॉनिकल फ्लास्क, बीकर्स या जो भी हम जिसमें प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लासेस को रख सकते हैं. ऑर्बिटल शेकर भी होता है, ऑर्बिट्स बने होते हैं, उसमें प्लेसेस बनी होती हैं जहां पर हम अपने ग्लासेस को रख सकते हैं जिनमें हमारा मीडियम के साथ कल्चर हो. Agitation with shaker is important because it breaks the cell aggregates. जो हमने कैलस लिया है वो बहुत बड़ा है या पार्ट है या उसके एग्रीगेट ऑफ सेल्स है, उसको वो मूव करने से हिलने से जो है सेपरेट हो जाते हैं. Smaller groups of cells, and it helps in maintaining the uniform distribution of single cells and groups of cells in the liquid medium. तो equal और homogeneous spreading के लिए यूज करते हैं इसको हम. ये जो है देखिए इसी में दिखाया गया है. Simply to say this is a explant which we culture on the medium. इससे कैलस का फॉर्मेशन हुआ. अब हमने इसमें क्या किया, सस्पेंशन और लिक्विड मीडियम लिया, इसमें हमने इसको डाला.
यानी इसको पूरा उठा करके विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप और इनोकुलेशन नीडल वी रिमूव इट एंड पुट इट इनटू द लिक्विड मीडियम। अब इसको एजिटेशन करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज शेकर। इसमें यहाँ प्लेटफॉर्म है, इसमें रख दिया, दोनों तरफ से कवर्ड होता है, गिरते नहीं है, और एक इसमें मूवमेंट नॉब होती है, उस पर हम इसको सेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और ये शेक होने से सिंगल सेल्स अलग हो जाती हैं। अब हम इनको माइक्रो चैम्बर कल्चर करते हैं, यानी पेट्री डिशेस में डालते हैं या छोटी छोटी बॉटल्स में कल्चर करते हैं। When they developed into or differentiated with specific growth hormones we put, then they differentiate into roots, shoots and other organs. तो regeneration हुआ, differentiation होता है, then it develops into the plantlet. अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं प्लांटलेट्स को पॉट्स में, दे विल बिकम अ मैच्योर प्लांट। अब ये प्रोसेस जो हम लोगों ने, मैंने अभी आपको डायग्रामेटिक भी बताया था, जो फिगर्स डायग्राम सिखाए थे या फोटोज दिखाई थी, कि हम लोग ग्रेजुअली इनको शिफ्ट करते हैं। ये पूरा लैब टेक्निक है, ये ग्रीन हाउस टेक्निक है। हम प्लांटलेट्स को छोटे पॉट्स में शिफ्ट करते हैं या बड़े पॉट्स में बाहर रखते हैं यानी ओपन एयर में, या फिर हम इनको फील्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं मैच्योर प्लांट्स को। तो दिस इज सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, रूट कल्चर, ऑर्गन कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। रूट कल्चर, पायनियरिंग अटेम्प्ट्स फॉर रूट कल्चर वर मेड बाय रॉबिन्स एंड कॉटे ड्यूरिंग 1920। जैसे 1920 से 1952 तक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता रहा इस फील्ड में। लेटर ऑन मेनी वर्कर्स ट्राइड फॉर अचीविंग सक्सेसफुल रूट कल्चर। In 1934, it was a white scientist name who successfully cultured the continuously growing tomato root tip, and he prepared a specific medium for culturing the roots called as White's medium. Now we use it as organ culture medium. Subsequently, root culturing of a number of plant species of Angiosperms as well as Gymnosperms have been done successfully. Root cultures are usually not helpful for giving rise to complete plants, but they have importance of their own. They provide beneficial information regarding the nutritional needs, physiological activities. Nodulation means nodule formation in the leguminous plants, infection by different pathogenic bacteria or other microbes, etc. So root culture is very important technique because this is the main part for the absorption. Now coming to next short answer question, that is shoot culture. Shoot cultures have great applicability in the field of horticulture. क्योंकि horticulture field क्या है? We developed many fruit trees, है ना। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए अलग ब्रांच है। पहले हॉर्टिकल्चर में फ्लावर कल्चर भी आता था, उसके लिए अब नई ब्रांच हो गई फ्लोरिकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। देन एग्रीकल्चर में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक शूट कल्चर। और वैसे भी हम लोग अपने गार्डन में बहुत सारी चीजों को स्टेम कटिंग से लगाते हैं, बिकॉज स्टेम हैज more power to regenerate as compared to other organs of the plant. तो इसको हम लोग कल्चर टेक्निक से भी efficiently follow कर सकते हैं। The practical application of this method was proposed by Morel and Martin, already told you, 1952, after they successfully recovered the complete Dahlia plants, because and they have used it for the infection-free plants from shoot tip culture. So shoot tip culture से इसको develop किया। और shoot tips मतलब हम apical portion में we know that meristematic tissue is there, shoot apex, root apex. So ये दोनों portions को frequently use किया जाता है culture techniques में, जहाँ meristematic cells ज़्यादा हैं। पता है हम लोगों की apical tissue में meristematic activity maximum होती है। Later on, Morel realized that the technique of shoot cutting can prove to be the patent method for rapid propagation of plants, that is micropropagation. तो उन्होंने इसको पेटेंट कराया, यानी ये शूट कल्चर टेक्निक स्पेसिफिकली मॉरल एंड मार्टिन की नाम पर है। In this technique, the shoot apical meristem is cultured on a suitable culture medium. This is also referred as meristem culture. हम लोग शूट कल्चर को अगर एपेक्स का पोर्शन लेते हैं तो we call it as meristem culture.
You will add this figure to your question. So this is mature plant. From that we are taking a single node segment. हम लोग single node segment ले सकते हैं, or we can take dissected apical tip जहां पर मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं. देखिए यहाँ शो किया गया है. सो दिस इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द एपिकल एंड. तो हम सिंगल एक्सप्लांट की तरह से नोड ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं. नोड में भी लिटिल मेरिस्टम इज प्रेजेंट व्हिच हेल्प्स इन ग्रोइंग अ प्लांटलेट. नाउ दिस मेरिस्टम, अगर हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू लिया है जिसको हम मेरिस्टम कल्चर और शुड मेरिस्टम कल्चर कह रहे हैं, तो ये मेरिस्टम टिप को हम लोगों ने सॉलिड मीडियम पे ग्रो कराया है, और सेमी सॉलिड वी कैन से. प्लांट रीजेनरेशन फ्रॉम मेरिस्टम टिप. अब देखिए प्लांटलेट रीजेनरेट हो रहा है. सीधी शूट एपिकल पोर्शन शूट का फॉर्मेशन करता है बिकॉज इट हैज द क्विक डिफरेंशिएशन पावर टू, but we will add growth hormones in the medium for differentiation. Now we multiply that under the greenhouse. हम इसी तरह बहुत सारी ट्यूब्स से लेकर के ग्रीन हाउस में मल्टीप्लाई करेंगे. Then each plantlet develops into the mature plant. So this is very efficient technique, regeneration of plants through meristem culture. Now coming to the next question, that is protoplast culture. A protoplast is dissected as a plasma membrane bound vesicle which consists of naked cells formed as a result of removal of cell wall. हम लोग क्या करते हैं, सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं लेंगे तो इसको एफिशिएंटली यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट प्रोटोप्लास्ट इज यूज्ड फॉर कल्चरिंग. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड हम लोग प्रोटोप्लास्ट लेते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती. द सेल वॉल कैन बी रिमूव बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स. एंजाइम से हम इसको रिजॉल्व करके या मैकेनिकल मेथड से, शेकिंग से और मैकेनिकल प्रेशर से हम इसको रिमूव कर देते हैं. द इन विट्रो कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट हैज इमेंस एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. इसको हम लोगों ने करंट फील्ड यानी मॉडर्न टेक्निक्स में इसको यूज करते हैं. If not only it not only serves for genetic manipulation in plants, but also for biochemical and metabolic studies. For protoplast culture, firstly, protoplasts are isolated from plants, utilizing some chemical and enzymatic procedures. तो हम पहले protoplast को separate करते हैं, then we culture it using specific culture medium for protoplast culture. अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एंड्रोजेनेसिस. मतलब हम लोग जो प्रोटोप्लास्ट लेंगे तो प्रोटोप्लास्ट को हम कहाँ से ले सकते हैं और जिसमें ज्यादा रिजेनरेशन कैपेबिलिटी हो यूजिंग पर्टिकुलर कल्चर मीडियम. तो एंड्रोजेनेसिस नेम इज इंडिकेटिंग दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट. द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स, वी आर प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड्स थ्रू एंथर and microspore culture. So we are taking male part of the plant, that is anther or microspore, we can say is termed as androgenesis. It is a method par excellence for large scale production of haploids through tissue culture. तो हम लोग haploids का production अगर हमें करना हो तो ये efficient है कि हम male part androgenesis करें, male part anther, part of the anther or microspore use. Now, endogenesis technique for haploid production is based on in vitro culture of male gametophyte, that is microspore of plant, resulting into the production of complete plant from it. It is achieved either by anther culture, this is anther culture, or by microspore or pollen culture, you can say. The technique of anther culture is quicker for practical purposes and is an efficient method for haploid production. But sometimes during anther culture, the plantlets may originate from different other parts of anther also.
तो वो एंथर के दूसरे पार्ट से भी डेवलप हो सकते हैं, इज फ्री फ्रॉम एनी अनकंट्रोल्ड इफेक्ट्स ऑफ द एंथर वॉल और अदर टिश्यूज. Microscope culture is ideal method for studying the mutagenic and transformation patterns. तो ये माइक्रोस्पोर कल्चर जो है म्यूटेशन स्टडीज के लिए और इफेक्ट ऑफ म्यूटेजेंस और ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए एफिशिएंट टेक्निक है. Now this is endogenesis of haploid production. तो ये एंथर कल्चर शो किया गया, ये पॉलन कल्चर है. फ्लावर बर्ड में से हम एंथर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ये एंथर्स आइडेंटिटी दिखाई गई है ना. We can separate डाइथिकस और मोनोथिकस एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड. और इसको हमने प्लेटिंग किया, यानी कल्चर मीडियम पे एंथर्स को हमने ड्रॉप किया और प्लेस किया. उसके बाद इनसे जो हैप्लॉइड्स बनेंगे वो पहले ये एम्ब्रियोइड बनाएंगी और दे डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देन कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, and then we put some growth hormones into that which differentiate the embryo into the shoot and root. So ye specific culture technique for anther culture. Similarly for pollen culture, we take anthers, we extract the pollen grains, है ना. फिर हम इनको स्लाइटली क्रश करते हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब की टिप से इसको क्रश करना दिखाया गया है. We can crush with the blunt end of glass rod also. Now we collect the pollen grains. इसमें से हम लोग डेब्रिस को निकाल करके pollen grains को कर लेते हैं. अब washing of pollen grain in the tube, then now place with the help of brush on the culture media. They developed into the embryo. They form a specific embryo. If they are from dicot, they form dicot embryo. From monocot, form monocot type of embryo. This is called as pollen embryo. These are called as haploid embryo from anthers. Pollen embryos, they after differentiation form the plantlets. Now coming to gynogenesis, it is an alternative source of in vitro haploid production. It refers to the production of haploid plants from ovary culture. And this is the female part. We are taking gynoecium part or ovule culture. The method of gynogenesis for haploid production has been successful so far in a very few plants only. यानी ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, कुछ पौधों में है, लेकिन एंड्रोजेनेसिस इज वेरी सक्सेसफुल. Hence, it is not a very popular method for in vitro production of haploids. तो haploids के लिए androgenesis. Thus, androgenesis preferred over gynogenesis. Now coming to another organ culture, that is the embryoculture. The technique of embryoculture involves the isolation and growth of an embryo under in vitro conditions to obtain a complete viable plant. So this is good technique for culturing or making the plantlets. First success of embryo culture was made by Hannick in 1904 when he isolated and cultured embryo of two crucifers, crucifery के member जिसमें mustard है, namely Cochlearia and Raphanus. Raphanus is Muli. Embryo culture is used widely in the field of agriculture, horticulture, and forestry. It's a good technique for the production of hybrid plants. This technique allows the detailed study about the nutritional requirement of embryo during different developmental stages. So, ये experiments nutritional requirement के लिए किए गए. Embryo culture is advantageous for in vitro micropropagation of plants, overcoming seed dormancy and for production of beneficial haploid plants. So we can prepare this by embryo culture. Next is endosperm culture. इसको हम लोग triploid production भी कहते हैं because we know that endosperm is triploid in angiospermic plants. Endosperm tissue is triploid, therefore plantlets originating by the culture of endosperms are triploid. In majority of flowering plant families, exceptions being Orchidaceae, मैंने बताया था ये rarely और difficult है to culture, Podostimaceae, Trapezae, which lack endosperm, है ना, because they do not have endosperm. तो ये endosperm से नहीं किया जा सकता. The endosperm tissue are present. The endosperm is formed after double fertilization of male nucleus with two polar nuclei, so it is triplicate.
So haploid, two polar haploid nuclei from the embryo sac and one male nuclei. Immature endosperm has more potential of growth in culture, especially among the cereals. Cereals mean efficient. Endosperm culture has provided a novel strategy for plant breeding and horticulture for the production of triploid plantleets. It is an easy method for production of large number of triploids in one step. Full triploid plant endosperm origin have been produced in a number of plant species like Populus, Oryza sativa, a cereal plant, then Amblica, Amla, Pyrus malus. These are all belonging to apple and Nashpati. Then triploid plants are usually seedless. Therefore, this technique is most beneficial for increasing the commercial production of apple, mango, and grapes, as well as watermelons. So this is all about the different short notes. Now some questions also comes as, so these questions I'll deal in the next class, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे सोमाक्लोनल वेरिएशंस क्या हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स और साइब्रिड्स क्या होती हैं, then what is micro propagation, they comes as a short answer question, then what is artificial seed, then what is cryopreservation, then in the final question comes as application of tissue culture technique. So I'll deal it next day because I have very less time to continue. So today I won't take your offline class, and your practical is not going to be held today as your teacher is on leave. If you have any question, you may drop a message in the YouTube comment box. Jai Hind.